Good morning, students. This is Dr. Mukul Jain here, and we are studying our subject corporate tax planning. Today, we would like to study the taxation of partnership firms and LLP firms, proprietorship firms. First of all, just the basics about partnership firms. As you know, partnership firm can have minimum of 2 partners and maximum number of partners can be 20. And to tell you straight away, the rate of tax which is imposed on a partnership firm is flat 30% on the net profits of the firm. So there are no slab rates, unlike in individuals, unlike in association of persons, unlike in body of individuals, unlike in HUF. They all get the facility of slab rates. But here, in the case of business firms, it's a flat rate of 30%. And if the income exceeds 1 crore, if the net profit of the business firm exceed 1 crore, then there will be an additional surcharge of 12%. Surcharge will be applicable. And of course, on the overall tax, there will be a health and education cess, which is 4%. This cess is also applicable in the case of individuals also, and cess is applicable in the case of business firms also. So health and education cess of 4%. So if the net income exceeds 1 crore, then there will be a tax. 1 crore ka tax kitna ho gaya? 30%, which will be 30,000 rupees. Sorry, 30 lakh rupees will be the tax. And on 30 lakh, you add 12% surcharge. So 30 lakh and 12% surcharge, how much it has become? 36,000? How much? So 30 lakh, 1, 2, 3, 4, 5 into 12%. Surcharge will be 3,60,000. Sorry. So 3,60,000 becomes surcharge plus 30 lakh. 1, 2, 3, 4, 5, 30 lakh. So total tax plus surcharge becomes 33,60,000. On 33,60,000, you have to add another 4% health and education cess. So which becomes 1,34,400. So then you add it to the tax which you have calculated. So that is how you calculate the tax of a partnership firm. Now a few rules before I share my slide. As you know, there has to be a partnership deed, taxation of the firm. Yes, very important point in partnership firm is that the partnership firm is taxed as a separate entity and the partnership firm gives its taxes. Once the partnership firm has given its taxes, then the partners who get the profits, share in the profits, they don't have to pay the tax on the same income. So the same income of a partnership firm is not taxed twice, it is only taxed once. Once the partnership firm has paid tax, suppose I am a partner of a firm and I am a 50% partner. Let's say my firm has made 1 crore of profits, net profit. So like this, we have calculated the tax. So my 50% share is say 25 lakh to me, has come to me. So 25 lakh, I don't have to pay tax on this now because already my firm has paid the tax. Unlike in the companies, in the case of company, we will talk about company later. In the case of companies, because the company is a different entity than an individual, than the people who have formed the company. So even the company pays taxes, and if I get some share in the profit, which is known as dividend, then that also will be taxable after a certain limit. Fine. That is another thing, that there is a rule that dividends up to 10 lakh rupees are non-taxable. Above 10 lakh rupees, if I am getting dividend, then that will be taxable in my hands. So therefore, we can say that the share of the partner
in the income of the firm will be fully exempt from income tax. Yes, in a partnership firm, you can show the salary or the remuneration given to the partner. So if you have provided in your partnership deed that yes, the partners can also be given a salary or the remuneration, then that is allowed. Then that is allowed, but there is a limit. So I'll be talking about that limit also. But if a partner of a firm is a sleeping partner, then the sleeping partner cannot be given any remuneration. Of course, an active partner can be given an remuneration. Okay. Now, what is the rule? With effect from assessment year 2010-11, the rule has come that deduction for payment of remuneration to working partners for both business as well as professional has been like this. Suppose your business firm has made a loss. So can you give up the remuneration to the partner? I ask this question to you people. If a business firm has made a loss, can you still give some remuneration to the partner in the case of partnership firms I am talking about? Just salaries and remuneration तो मिलेगा ही. मिलेगा, yes. Okay. Here there is a, what you are saying is correct, but there is a condition to it. There is a rider to it. There is a caveat to it. What is that? Because income tax department used to see that people are paying salaries, huge remuneration they are showing to the partners, and then ultimately they are showing loss. Suppose it's a small firm and a small firm had made a profit of say 15 lakh rupees in a year. Now out of 15 lakh you have shown 12 lakh rupees as the remuneration, 1 lakh rupees per month. So it's a small firm here. How can you take 12 lakh rupees as you can take? But if your firm is making or you have shown 16 lakh rupees as the remuneration, now you are showing loss of 1 lakh rupees. Your firm has made a profit of 15 lakh and you have shown a remuneration of 16 lakh to one partner or two partners, and so you have shown a loss of 1 lakh rupees. So in the case of loss, what is the rule? If there is a loss up to 3 lakh rupees in a business firm, then the amount of remuneration or amount of deduction which you can claim on account of remuneration would be 90% of the profit. If there is a profit, then 90% of the profit up to 3 lakh rupees, either there is a profit or loss. But if there is a loss up to 3 lakh rupees, then you can show maximum remuneration of 1,50,000. That is 50% of the loss. Only 1,50,000 rupees you can show as the remuneration. If you have profit only up to 3 lakh rupees, then also you can show remuneration either up to 1.5 lakh or 90% of the profit. And if there is a more profit, let's say there is a profit of 20 lakh in a business firm, so up to 3 lakh profit you can show 90% of the profit. So 3 lakh का 90% कितना हो गया? 2,70,000. तो वो remuneration हो गया. Balance जो बचा 20 minus 3, that is 17 lakh पे you can show only up to 60% of the profit. On 17 lakh, इसका मतलब हो गया 17, 1, 2, 3, 4, 5, 17 lakh into 60%. So you can show remuneration of 10 lakh 20,000. So that there is a limit, no? कि जितना now in very simple language 3 लाख तक के प्रॉफिट पर आप 90% तक का रिम्यूनरेशन दिखा सकते हो या 1.5 लाख दिखा सकते हो रिम्यूनरेशन. उसके बाद जो भी बैलेंस प्रॉफिट होता है 3 लाख के बाद, उसका आप 60% ही रिम्यूनरेशन आपको अलाउ होगा. इनकम टैक्स ऑफिसर अलाउ नहीं करेगा आपको उससे ज्यादा रिम्यूनरेशन अगर आप शो कर रहे हो. अब आप देख लो तो आपको उस हिसाब से अपने रिम्यूनरेशन, ऐसा नहीं है कि योर स्टैंडर्ड इज वेरी हाई एंड बिजनेस फर्म में यू आर शोइंग लॉसेस या वेरी लेस प्रॉफिट्स. सो देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ थ्रेशोल्ड. अगर लॉस दिखा रहे हो 3 लाख तक का लॉस दिखा रहे हो तो आप तब भी 1.5 लाख तक का आप अपने लिए रिम्यूनरेशन निकाल सकते हो, उसका 50%. ओके.
Okay. Now, partners can also show interest. Suppose partners ने अपनी capital लगाई हुई है, so they can charge the interest of their capital, which can be shown as an expense. However, so I'll repeat my sentence, which I said. If the business firm has paid its taxes and as a partner you have received your share in the profits, then the income will not be taxable. However, as a partner, if you have received any remuneration from your partnership firm, or if you have received any interest on your capital from your partnership firm, then that will be taxable in your hands and it will be known as a business income. Even though it is shown as a remuneration, you cannot show it as your salary. So you will not fill up the form, income tax form, which is for salary. You will or still fill up the income tax form and you will show income from business only. So therefore, I am reading from one para from the section. It is written that remuneration is not taxable under the head salary. Remuneration to the partners. Remuneration is not taxable in the hands of the partners under the head salary. It is taxable as business income. So this will be taxable. Okay. So now I want to share my slide. Let us talk it in more detail, how the business profits are calculated. Any doubts so far to whatever I have said? No, sir. So what is the tax rate for partners remuneration? What is the tax rate for partners remuneration? So okay, so as an individual, the tax slabs will apply, because as an individual, because my firm will be paying as at a flat rate of 30%. However, if I am a partner and I am receiving, so I will show it as a business income, but tax slab rates will be applicable to me. So if it is up to 2.5 lakh, there is no 0% tax. So any income above 2.5 lakh up to next 2.5 lakh is taxed at the rate of 5%. So like that. Okay, Then sir. another next 5 lakh will be taxed at the rate of 20% if I am opting for the first option. Fine. Okay, sir. So Thank for you. individuals, it will apply. The individual tax rates will apply. So business income presentation. I hope you are able to see this on your screens, isn't it? Are you able to see this slide? Yes, sir. Yes, sir. Good, good, good. Okay, straight away, let me tell you some rules. What are the allowable expenses? Let us say you are an income tax officer. So you will make cuts, like in a income tax, or you are a CA. So if your client has come to you, so you will say allowable expenses. You will allow expenses of rent if the premise is on rent, repairs to plant and machinery, to building, etc. So that will be allowed. Any insurance done for the stocks or for the building, any municipal taxes if he's paying for the building, so that those are allowable expenses. Similarly, again, it has come in the second point, repairs and insurance of plant, machinery and furniture is allowed. Depreciation is allowed. So I will also give you if the maybe sometime later we'll tell you how the depreciation is calculated. So depreciation on plant, machinery, on furniture. So there are different rates for different plant and machinery. There is a different rate. Computers, there is a different rate of depreciation. Electronic items, there is different rate for depreciation. So depreciation is allowed. Then insurance premium on stock in trade. Stock in trade means the inventories which you are selling. So insurance, you can do insurance.
In case, in case there's a dairy industry, then insurance premium paid by federal milk cooperative societies on the lives of cattle. Then sixth point is premium paid by employer for medical insurance on the health of his employees. Suppose you have taken a group insurance plan on the for the health of your employees, that is group insurance plan if you have taken, or for life insurance, those are allowed as business expenses. If you are giving any bonus to your employees, any commission also, for example, many times you give incentives, you give sales commission to your employees, so those are allowed as expenses on actual payment basis. Next, eighth point, interest on borrowed capital. Of course, if you have taken any loan and you are paying interest, that is also an expense for the business firm. Ninth point is employer's contribution to recognized provident fund or approved superannuation fund. As you know, there is an act called Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. According to this, any business firm employing more than 10 persons have to compulsorily provide the provident fund facilities to its employee. That means up to 12% of the basic salary is deducted and is deposited with the EPFO, that is Employee Provident Fund Office, and a equivalent amount is also deposited by the employer with the EPFO, that is Employee Provident Fund Office, which is run by the central government. So whatever is the contribution of the employer in the recognized provident fund for office each employee, so he will total up every month what is the total provident fund he has deposited on behalf of his employee. So, and accordingly multiplied by 12. So total provident fund deposited is also an expense for the employer. It's a part of the salary for the employer. It's you can say like the cost to the company. So it is cost to the company, so it is an expense. Then 10th point, superannuation fund means, what do you mean by superannuation fund? Very simple question, but just I want to check. What do you mean by superannuation fund? Quickly tell, my dear students. Nobody knows. सर कोई प्रोविजन वगैरह बनता हुआ है शायद. So for future pensions. Superannuation means that when an employee gets retired, so after retirement, this will be the fund. Now there are two words. Sometimes we may call it pension fund, we may call it retirement fund, or we may call it superannuation fund. What is the difference between all these things? Is there any difference now? I'm also saying it is after the retirement. When a person gets a fund, it's known as superannuation fund. Normally, retirement may be used in a very common sense also. Okay, that I want to retire to bed today. I have done my day's work, so I am retiring to bed. Retiring word sometimes we used in everyday parlance also. And many times a person may take a voluntary retirement also. In many public sector companies and many public sector banks, even banks offer that, okay, those who want to opt for VRS scheme, voluntary retirement scheme, they can retire. And even if you are in a private company, you may say, okay, after 45, no, I will, or after 50, although the actual age of retirement may be 60, 62, 63, but I want to get retired by 50. So retirement, but superannuation means that a person has retired after completing his or her full service tenure. Then it is known as superannuation. For example, in many government jobs or in defense services, the superannuation age is 60. In the case of educational institutions, universities, schools, colleges, the superannuation age is 65. So superannuation means after completing the full service. So retirement could be sometimes early retirement, it could be voluntary retirement. For example, in
military services also, in defense services also, there is a short service commission wherein people take retirement after 40 years. But they are retired, they have got short service commission, so they have got retired. They have not superannuated. Superannuation is when they have completed the full tenure till the last age, threshold age, which is defined in the services. Got it? What is superannuation? Now, you will now not forget what do you mean by superannuation. At least you must speak yes or no, that yes, is it clear now? Yes, sir, it is clear. So superannuation, Yes, if I see in a dictionary, what is superannuation? How they have defined it? They have said a monthly payment made to someone who is retired from work with the property. The act of discharging someone because of age. So that means after completing the full age period. Okay, so that is called superannuation. So pension, many times, pension, people at 40 also may get pension. Many people in the services, in the defense services, they get retired and there is a short service commission. They entered, let's say at 25, that was a 15 years service. After 40, they enter into any private sector or whatever, they may do their own business, but they are getting still pension. So pension can be given even in a short service also. But superannuation fund means after completing the full tenure of the job. Anyway, let us come to the 10th point. So contribution to approved gratuity fund. If the employer has made any contribution to the approved gratuity fund, that is also an expense of the business. What do you mean by gratuity? I again want to test your knowledge. What do you mean by gratuity? Tell me. How many people have joined? Let me just check. Oh, very good. 66 people have joined, Ravi. 65, or you can say 65 people. You were saying 62 people have opted, but already 65 people are there in my lecture. it might be possible, sir. One or two are opted. We opted, sir. 2 or 3 more Extra. must have opted. अच्छा, very Yes, sir. good यार. 65 people are there. हाँ, तो बताओ यार, gratuity से क्या समझते हो? What do you understand by gratuity? सर ये एक अमाउंट होता है जो कंपनी क्या कहते हैं एम्प्लॉय को देती है उसकी काम के लिए, मतलब अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के साथ रहता है तो। ओके, चलो आपने जनरल बात बताई, जनरल स्पेसिफिक. Who will like to tell me the specifics about the gratuity? ये इन्होंने जनरल बात बताई जो ठीक है, but what is specifically gratuity? Who becomes eligible to get gratuity? Gratuity Act 1972 में बना था. देखो ये ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आप देख रहे हो ना. 5 years या लगता है एम्प्लॉय को देने के लिए। yes, an act to provide for a scheme for the payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil fields, plantation, ports, railway company, shops or other establishment for that matter connected and incident. Payment of gratuity act, ये गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है. अच्छा, पूरा एक्ट ही आ गया इसमें तो. अरे, नॉट टाइटल एक्ट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. देखो थोड़ा इसको बड़ा करता हूं मैं. The act may be called as the Payment of Gratuity Act 1972, extends to whole of India. अच्छा, ये अब खत्म हो गया. पुराना एक्ट इन्होंने वो निकल गया. इट शेल नॉट एक्सटेंड. पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, प्लांटेशन कोर्ट्स में. अब तो खैर वो एक्ट ही खत्म हो गया ना, 370, तो सब जगह अप्लाई करता है. Because ये भी 10 and more %. It is applicable to every shop and establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishment in which 10 or more persons are employed or were employed on any day of the preceding 12 months. So appropriate. चलिए, तो पूरा एक्ट आ गया. चलो मैं इसको यार डाउनलोड ही कर लेता हूँ अपने से इसमें. Okay, so now Payment of Gratuity Act sale. Okay, so coming back to the slide,
ग्रेचुटी देखो, जैसे अभी आपने देखा होगा, आपने बता रहे हो कि हु इज एलिजिबल व्हेन द एम्प्लॉय इज एलिजिबल इफ द एम्प्लॉय हैज served a particular employer for a continuous 5 years, then this employee becomes eligible for the gratuity. Continuously with one employer only. It's not that if you have changed jobs, after 1 year you have changed the job, after 6 months you have changed the job, you have done jobs for 7 years, 8 years, 10 years. No. You have to work continuously for 5 years with one employer. Then after 5 years, you become eligible to get a gratuity as and when you leave that organization or whenever you retire from that organization. So how this gratuity is calculated, when a person leaves the organization or when the person superannuates from that organization, the organization will see what was your last drawn salary at the time of leaving the company. उस last drawn salary में जो basic salary होगी आपकी, basic salary महीने की निकल जाएगी, उसके हिसाब से they will calculate 15 days salary. So 15 days salary will be given to you extra. 15 days salary per year multiplied by number of years you have served in that organization. For example, a person left the organization. एक मिनट, let's just let me open up my Word. YouTube videos, tax calculation, ये हमने पिछली बार. So for example, a person's last drawn basic salary per month was, let's say, rupees, बोल देते हैं हम, चलिए 40,000 रुपया लगाते हैं. सीनियर पोजीशन थी तो बेसिक सैलरी सिर्फ ले रहे हैं हम 40,000 पर मंथ. तो साल की कितनी हो गई पर एनम? 40,000 into 12, 12 4 the 48, 4,80,000. ठीक है, इसका आप लगा लीजिए डिवाइडेड बाई हाफ. तो इसका 15 डेज की सैलरी हो गई ना, एक साल की कितनी हो गई है? 2,40,000. ना एक महीने की बेसिक सैलरी हमने ये लगाई है, तो साल की इतनी हो गई, इसका 50% हो गया 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई, इसने सपोज मल्टीप्लाइड कहाँ गया, एक्स, सपोज इसने 20 इयर्स काम किया है, कितना हो गया ये? 48, ये तो मैंने खैर बहुत ज्यादा लगा दिया, 48 लाख रुपीज हो गया इसका. हो गया, ये ग्रेचुटी बन गई इसकी 2,40,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाई 20 इयर्स ही हैज वर्कड. 48 लाख उसकी ग्रेचुटी बन गई, विच ही विल गेट आफ्टर सुपर एनुएशन, या जब भी वो जॉब लीव करता है. बट एलिजिबल कब होगा एम्प्लॉय? जब उसने कम से कम 5 साल काम किया हो उस ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये रूल होता है. और उसमें अभी वैसे ग्रेचुटी में, वैसे आपको बता दूं कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 20 लाख तक की ग्रेचुटी अभी टैक्स फ्री है. सेंट्रल गवर्नमेंट को के एम्प्लॉय को के लिए कोई लिमिट नहीं है. इफ यू आर वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, योर होल ग्रेचुटी विल बी टैक्स फ्री इन योर हैंड्स. बट फॉर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर, ग्रेचुटी अप टू 20 लाख रुपीज. ये अभी 2019 के बजट में 20 लाख किया था, उससे पहले 10 लाख था. 2019 के बजट में 10 लाख से स्ट्रेट अवे 20 लाख तक की ग्रेचुटी टैक्स फ्री कर दी थी, क्योंकि बेसिक सैलरीज तो कम होती हैं. तो मैंने खैर एनीवे मैंने बड़ी सीनियर पोजीशन की ये 40 लगा दी, तो 48 लाख बड़ी सीनियर पोजीशन में जो ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके तो कई
कई लाख, इतने लाख उनकी बन जाती है बड़े आराम से ग्रेचुटी। 5-7 करोड़ रुपया उनको कहीं सुपर एनुएशन फंड, कहीं पीएफ फंड, ये बन जाता है उन लोगों का, बल्कि ज्यादा ही बनता होगा जो बहुत सीनियर पोजीशन पे रिटायर हुए। ठीक है जी। तो हाँ, इसमें भी ग्रेचुटी, अब मान लीजिए किसी को 48 लाख देनी है, किसी को 10 लाख देनी है, एक साथ आपके एम्प्लॉइज, आप बिजनेस फर्म चलाते हैं, तो कहाँ से आ जाएगा उस टाइम पैसा? तो आपको हर साल एक ग्रेचुटी फंड बनाना पड़ेगा, हर साल उसमें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या हर महीने उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी तो आप दे पाओगे अपने एम्प्लॉय को, नहीं तो कहाँ से दे पाओगे आप? इकट्ठा कहाँ से पैसा आ जाएगा? उस साल अगर आप बिजनेस फर्म से निकालोगे तो आपका बिजनेस फर्म तो उस साल पूरा लॉस दिखा देगा ना। So these kind of accounting practices will not be allowed. Even chartered accountant भी ये audit करता है, वो कहेगा ना एक साथ आपने कैसे भाई gratuity का पैसा निकाल दिया? So you have to provide contribution to the approved gratuity fund approved by the government. So the employer has to contribute to it. So whatever is the contribution, that is treated as allowable expense. Then employees contribution to provident fund, once deducted then by default added to net claim for reduction if deposited before due date. Employees का जो contribution जा रहा है provident fund के, basically that is part of the salary. वो दे तो employee रहा है ना, तो salaries या employees का contribution जो है वो भी उसके expense में आ जाएगा employer के, और उधर एम्प्लॉय भी उसको क्लेम करेगा, क्योंकि एम्प्लॉय सेक्शन 80C मैंने आपको जो पढ़ाया था कि मैं अगर एम्प्लॉय हूं और मैं जो पीएफ में जमा कर रहा हूं, तो वो मैं सेक्शन 80C में उसको डिडक्शन ले सकता हूं। सिमिलरली जो वो जमा तो करा रहा है आपका एम्प्लॉयर ना, तो सैलरी का पार्ट है, तो वो भी अपना उसको एक्सपेंस दिखाएगा। देन 12th को अभी छोड़ देते हैं, राइट ऑफ अलाउंस फॉर एनिमल्स। ये पर्टिकुलर एक उन इंडस्ट्रीज के लिए जहां पर एनिमल्स से रिलेटेड या डेयरी इंडस्ट्री से के लिए है। अगर कोई एनिमल की डेथ हो गई, उसके सपोज डेयरी चला रहे हो, आपके पास काउज हैं, बफेलोज हैं, तो उसमें किसी की डेथ होगी तो उसको राइट ऑफ अलाउंस कर दोगे, तो उसका जो कॉस्ट है वो आपका एक्सपेंस माना जाएगा। बैड डेट्स लाइक इन द केस ऑफ बैंक्स, इन द केस ऑफ एनी बिजनेस फॉर्म, आपका कहीं पे आपने क्रेडिट पे दिया था, उधार दिया था, वो आपका वापस ही नहीं आया, तो आप उसको बैड डेट में डाल देते हो, which is treated as an expense. And government has also allowed family planning expenditure if you are doing some awareness programs for family planning or etc. for your people, for your employees, then you can claim it as an expenditure. General deduction में such expenditure should be covered. B point पढ़िए, it should be incurred for the purpose of business and profession. Main ये है कि business and profession के लिए जो आपके खर्चे हैं that will be allowed. आपके personal expenses will not be allowed. And C point is also important point. It should be a revenue expenditure and not capital expenditure. Now, many of you have studied a lot of accounting. You are still studying an accounting subject, and many of you are commerce students. तो ये इसका मुझे मीनिंग समझाइए बाकी स्टूडेंट्स को, कौन समझा सकता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज हु वुड लाइक टू आंसर इट? सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होता है, ये बेसिकली स्मॉल अमाउंट का होता है और रिकरिंग नेचर का होता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो ह्यूज अमाउंट का होता है, लेकिन ये रिकरिंग नहीं होता है सर। लाइक हमने मशीन परचेज की है या फिर हमने प्लांट परचेज किया है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और जैसे रॉ मटेरियल बार बार हमारा उसमें एक्सपेंडिचर होता है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। करेक्ट करेक्ट। योर गुड नेम? सर नेहा डिमला। हाँ नेहा, अरे वेरी गुड, वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन्ड, वेरी नाइसली। सो मेरे ख्याल में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नेहा ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई मीन, अगर मैं कोई, जैसे इन्होंने बोला मैं मशीनरी खरीद रहा हूँ, मेरा साल में प्रॉफिट तो आता है 10 लाख रुपया, और मैंने 15 लाख की मशीनरी खरीद ली है उस साल, तो मेरा तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं कभी भी। मैं हर साल कोई ना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा रहा हूँ, कुछ ना कुछ, तो कभी भी प्रॉफिट आएगा नहीं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर व्हिच इज incurred to earn the revenue, as simple as that.
For example, my sales expenditure, my advertising expenditure, my expenditure to give salaries to my employees, electricity expenses, my rental expenses. So those all are expenditure to earn my revenue. So those are capital expenditure, revenue expenditure. So capital expenditure cannot be shown in a business firm. Capital expenditure we have to show as the capital. You can say the machinery I will show in assets in the balance sheets. जो मशीनरी आई है इट इज माय एसेट, बट उसके लिए जो पैसा गया है दैट विल बी माय लायबिलिटी. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकवर किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पे बैक पीरियड कितना रहा मेरे लिए, ठीक है ना. इन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सपोज देयर इज अ पर्सन हु हैज गॉट 3 cars and he is running them as cabs, as taxis. तो 3 कारों के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाएगा ना. पेट्रोल एक्सपेंसेस, उसने ड्राइवर रखा हुआ है आपने, तो ड्राइवर का एक्सपेंस दिखाओगे, उसका इंश्योरेंस एक्सपेंस दिखाओगे, उसका रिपेयर, टूट फूट, डेप्रिसिएशन, वो सब क्लेम करोगे. बट आपने एक और 4th कार खरीद ली है, तो 4th कार कैन नॉट बी शोन एज अ expenditure because it's a capital expenditure. In your balance sheet you will show that I have spent 7 lakh 8 lakh rupees to buy another car, and that car is being shown an asset, and liability side में show करोगे जो पैसा आपका गया है, जो आपने कैपिटल लगाया है as a partner. Then D point, I think it's now very much clear to all of you. Any doubt? Then D point says it should not be a personal expenditure. E point, it should not be my own. For example, I am taking some health insurance for myself. It will not be shown. I am a partner in a firm. I cannot claim it. It's my personal expense. However, if I am taking a group health insurance for all my employees, including I am also covered in it, then it is allowed. Or if I am going for a holiday to Shimla, so I cannot put those expenses in my business form. So those are my personal expenses. Even there is a rule. Many times in small business firms में क्या होता है कि हम लोग, अब मेरे पास अपनी गाड़ी है and I am using that गाड़ी for meeting my clients also. That is being used for business purposes. And my car is also used for my personal expenses also. For example, I am taking my family for an outing, so I am using for personal use also. So the car is not completely used for the official purposes, it is being used for personal purposes also. So if the income tax personnel come to know about it, they will say that no, 50% expenses you can claim for depreciation, 50% for driver salary, and 50% for fuel expenses can only be shown in the business expenses. Rest will be my own personal expenses. Similarly, if you have let's say you have started a business from your home premises, एक जगह थी, वहां पर आप कोई अपना बिजनेस शुरू कर दिया, आपने कोई वहां पर शॉप खोल दी है, या वहां पर आपने अपने कोई ऑफिस बनाया हुआ है. लेट्स से आप कोई लॉयर हैं, कंसल्टेंट हैं, आपने घर में ही एक अपना रूम बनाया हुआ है, वहां आपके क्लाइंट्स आते हैं और आप सारे घर का बिल अपने एक्सपेंसेस में डाल रहे हो, अपने घर के बिजली का बिल डाल रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नो. तो द रूल सेज कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है, वो देखेगा कितना स्क्वायर फीट एरिया आपने कवर किया हुआ है अपने रेसिडेंस का फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो उसी प्रोपोर्शन में यू कैन claim the electricity expense, you can claim all other expenses, like your safai karamchari expenses, etc. So it should, then E point says it should not be in the nature of penalties for breaking any rules. Suppose your business firm has been imposed a penalty by the income tax department or by the municipal authorities or by sales tax department. So whatever fine and penalties you can pay, that is not your expense. You cannot show them those penalties as the expense. Such business or profession should be continued in current year, expense incurred by the assessee in the previous year. What are the disallowable expenses? If you have, suppose an election is going on, let's say अभी जैसे बिहार में इलेक्शन आने वाला है,
तो वहां आप किसी पार्टी के पैम्फलेट्स बनवा रहे हो, नीचे सौजन्य से लिख देते हैं ना, स्पॉन्सर्ड बाय एंड सो, आप किसी के बैनर्स बना रहे हो, सो अपना भी आपका, सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट अलाउड. Building, second point is building plant and machinery or furniture not used for business is not allowed. Taxes and TDS. Whatever income tax you have paid, that is not your expense, because income tax is paid only after deducting all your expenses. So income tax, आपने पिछले साल income tax दिया, that is not your expense. You cannot claim it as your expense. Of course, जो sale tax, VAT, GST है वो, that is can be shown as expense. TDS, tax deducted at source, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे. There is a topic on TDS also. Then any remuneration, salary, bonus, commission paid to the partners by his partnership firm under section 40B में ये लिखा हुआ है, अगर आपने partnership deed में mention किया नहीं किया है तो then you cannot pay, फिर वो expense allowed नहीं होगा. Then fifth is excessive payment made to specified person, relative or substantial interest that is holding at least 20% of the voting power. अगर मेन पार्टनर है उसको आपने excessive payment किया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया था जो रूल है that first 3 lakh rupees पर आप you can pay remuneration up to 90% of the profit and balance पे you can only pay 60% of the profit. अगर उससे ऊपर आपने पेमेंट किया है excessive payment to a specified person, that is partner, जिसके पास 20% वोटिंग पावर है, तो it will not be allowed. Then expenses paid in cash. हाँ, अभी देखिए बहुत सालों से ये गवर्नमेंट ने to discourage cash transactions, आप इकट्ठे किसी को 20,000 से पेमेंट ज्यादा नहीं दे सकते कैश का, आपको you have to give it through check or draft or through bank or through any digital payments. So then 100% it will be disallowed, you know, it is written. आपको किसी को पेमेंट देना है अपनी पार्टी को, अगर 20,000 तक आप दे सकते हो, कैश दे सकते हो. जैसे हम लोग लाते हैं वैसे ये सब चलता है, हम लोग फर्नीचर लाते हैं, 50,000 का फर्नीचर लाया हूँ मैं, 50,000 हम उसको कैश देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आप वो ले नहीं सकता आपसे. हाँ, 10-20,000 का, 15,000 का आपने कोई फर्नीचर लाए हो तो आप दे सकते हो उसको कैश में पैसा. अदरवाइज उसके ऊपर आपने अगर कोई चीज खरीदनी है, सपोज आपने कोई रिंग खरीदी है अपने लिए और 20,000 तक का ज्वेलर लेगा, उसके ऊपर आपको बोलेगा कि नहीं सर आप चेक दीजिए मेरे को या ड्राफ्ट दीजिए, बैंक से मेरे को ट्रांसफर करिए, या डिजिटली भी ट्रांसफर कर दिया, और समझो दैट हैज नाउ बिकम अ ट्रांसपेरेंट पेमेंट. फाइन. Yes, sir. Then disallowable expense, if you have you are making contribution to unapproved gratuity fund or unrecognized PF fund. URPF means unrecognized PF fund or unrecognized superannuation funds, then the expenses will not be allowed. Now let us take one example. We are saying Nakul and Sahdev are partners of Messrs Bharat Sales and Services. Following information has been provided. So this is the trading and profit and loss account. So here this is credit entries. Here there are debit entries. So in credit entries by sales, he has done sales of 20 lakh rupees. एक small firm है, हम उसको देख रहे हैं कि 20 lakh की उसने sales की है. क्लोजिंग स्टॉक उसके पास बचा है 85,000 का, तो टोटल आपने लगा दिया 20,85,000. ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट. नीचे है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर हमने एक ही पेज पे दे दिया. तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है ना. इधर आ गया ओपनिंग स्टॉक, जब उसने साल शुरू किया था तो 75,000 का उसके पास ओपनिंग स्टॉक था. इसने परचेजेस की हैं 15 लाख रुपीस की, और 20,85,000 माइनस 15,75,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5,10,000. दोनों को टोटल हमने बैलेंस बराबर कर दिया. 20,85,000 इधर, 20,85,000 इधर. ठीक है, मेरा कर्सर को फॉलो करिए जहां जहां मैं बोल रहा हूं. ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट. ऐसे सिंपल बनता है सिंपल फॉर्म में. सेल्स आ गई, इधर आपकी परचेजेज आ गई. ओपनिंग स्टॉक जितना था वो ऐड कर दिया इसमें, या क्लोजिंग स्टॉक आपने ऐड कर दिया, और इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. बट ग्रॉस प्रॉफिट में आप अपने खर्चे अभी माइनस करोगे
तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ गया आपका 5,10,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें आपके यहाँ खर्चे आ गए, ये इसने एक्सपेंसेस डाल दिए, 2 सैलरीज 2,50,000, कमीशन दिए हैं उसने 40,000 की, सेल टैक्स दिया है 35,000 का, जनरल एक्सपेंसेस 5,000, एडवांस इनकम टैक्स 54,000, interest on capital 42,000, depreciation on furniture 4,000, advertisement 16,000, free distribution of samples 3,000, insurance premium on life of partners 8,500, printing and stationery 3,500। फिर इन सब का ऐड करके और इसको 5,10,000 में माइनस करके आपका नेट प्रॉफिट निकल गया 46,000। इसके कोई पुराने उधार थे, वो बैड डेट्स थे जो उसने डाल रखे थे, उसकी रिकवर हो गए 15,000, तो वो भी इसने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दिया यहाँ। तो नेट प्रॉफिट इसने दिखाया 46,000। दोनों का बैलेंस आपने फिर बराबर कर दिया। इस तरह बनाते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5,25,000 इधर, 5,25,000 इधर। अब इसमें हमें और ये क्वेश्चन वैसे डिटेल देगा, लेकिन अभी प्राइमा फेसी आप इसमें देखोगे, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, आपके पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप इमीडिएटली देखोगे वन ग्लैंस में कि सैलरीज हैं, चलो अलाउ होंगी, कमीशन अलाउ होगा, सेल टैक्स अलाउ हो जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम टैक्स इसने जो 54,000 का, ये अलाउ नहीं होगा। Because just now I have told you that income tax is given after on the net profit. So when he has claimed all the expenses, so income tax is never an expense. Income tax is an obligation. Income tax is a duty to pay. It's not an expense. So ये 54,000 जो उसने एडवांस पे किया है तो पे करना है, ये this is not an expense, ये अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट ठीक है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल भी अलाउ होते हैं, क्योंकि सैंपल आपको सेल्स के लिए सैंपल भी देने पड़ते हैं अपने कस्टमर को। अब ये जो इसने लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ पार्टनर्स, ये अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने एम्प्लॉइज के ऊपर लिया होता तो अलाउ होता, उसमें पार्टनर भी कवर हो जाते, बट ये खाली पार्टनर के लिए लाइफ इंश्योरेंस जो लिया है ये अलाउ नहीं होगा। 8,500 प्राइमा फेसी, ये दो चीजें इसमें अलाउ नहीं होगी। आर यू ऑल विद मी? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ, नींद Yes, तो नहीं आ sir. रही है कहीं किसी को? No, sir. No, I sir. hope. अच्छा, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आई है, अब इसके हिसाब से हम देखेंगे इसका टैक्स कितना बनता है। अब इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, सैलरीज इंक्लूड 40,000 पेड टू पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड एंड वेल विद इन द लिमिट अंडर सेक्शन 40B, तो अलाउ होगा। इसका मतलब ये है 40,000 पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को देंगे, और जो सेक्शन है जो मैंने अभी आपको रूल बनाया उसके सेक्शन के हिसाब से आता है, तो ठीक है, अलाउ होगा सैलरीज फिर पार्टनर्स को। सेकेंड पॉइंट, जनरल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्लेजर टूर ऑफ पार्टनर्स विद देयर फैमिली मेंबर्स टू गोवा। अरे हम तो सोच रहे थे जनरल एक्सपेंसेस जो है ना, मैंने कहा था अलाउ होंगे 5,000, अब इसमें इन्होंने लिख दिया है तो इनके पार्टनर्स का अपना प्लेजर टूर था, तो ये अलाउ नहीं होगा जनरल एक्सपेंसेस, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। थर्ड पॉइंट, इनकम टैक्स पेड इंक्लूड्स 40,000 पेड एज टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, 40,000 तो पार्टनर्स के इंडिविजुअल टैक्सेस थे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं अलाउ होंगे, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज बैड डेट्स रिकवर्ड वेयर अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन, तो ठीक है, डिडक्शन पहले उसने क्लेम कर लिया, तो ये बैड डेट्स इसीलिए उसके जो हैं ये ऐड हो जाएंगे उसके प्रॉफिट में, क्योंकि देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स इज इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स बाय 1,500। हाँ, एक और रूल आया है कि आप कितना इंटरेस्ट लगा सकते हो एज ए पार्टनर। आपने अपनी कैपिटल लगाई है अपने बिजनेस में, आप कितना इंटरेस्ट लगा सकते हो? सपोज आप बोलते हो कि जैसे गांव में जो आज भी जो गांव में महाजन होते हैं, जो गांव में लाला लोग होते हैं, वो गरीब लोगों को इंटरेस्ट पे कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो 36% पर एनम, 24% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और कल को आप भी अपनी है ना, और उसके बदले में वो भी लेते हैं उनका कि भाई सोना चांदी जो भी है उसका कोई ज्वेलरी है वो गिरवी रखो, तब दूंगा मैं तुमको। Yes, sir. और क्योंकि ये गांव के बिल्कुल गरीब जो पढ़े लिखे लिटरेट लोग होते हैं, दीज पीपल डू नॉट नो हाउ टू अप्रोच अ बैंक या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, उनको कोई पता नहीं होता, तो वो अपने सामान गिरवी रख के इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठाते हैं।
तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप 24% लगा लो इंटरेस्ट, 12% की लिमिट बनाई हुई है उन्होंने। 12% भी देखो बहुत है, बैंक आज 5, 5.5, 6% दे रहा है मैक्सिमम। तो आप 12% इंटरेस्ट अपने पार्टनर्स लगा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि उससे ऊपर 1500 रुपए ऊपर आ रहा है उससे, जितना इंटरेस्ट उनका बनता है। इंटरेस्ट इज इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, तो ये भी अलाउ नहीं होगा। उन्होंने जो इंटरेस्ट लगाया हुआ है पार्टनर्स ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पीछे दिया हुआ ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 रुपए लगाया हुआ है, तो इसमें 1500 रुपया वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर सो एंड सो। सर ये Yes. इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल का मतलब वही हुआ ना, क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल जो वो मांग रहा है? नहीं नहीं, रिटर्न नहीं हुआ है। आप सपोज कमलेश, आपने 5 लाख रुपया अपनी बिजनेस फर्म में लगाया, आप हो पार्टनर और दूसरा रवि है पार्टनर, आप दोनों हैं, दोनों ने 5-5 लाख रुपया लगाया, तो आप अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाओगे ना, क्योंकि सर वो बिजनेस इंटरेस्ट तो वही हुआ ना, क्या कहता है, अगर मैं कोई रिटर्न मांगूंगा तो वो रिटर्न इंटरेस्ट ही तो हुआ, मतलब पैसे आ रहे हैं मेरे पास। रिटर्न नहीं, सॉरी, क्वेश्चन दोबारा बोलो। सर ये मैं अगर पैसे लगाता हूँ बिजनेस में, क्या कहते हैं, एज अ पार्टनर, तो मैं उसका कुछ रिटर्न मांगूंगा, तो वो एज अ इंटरेस्ट मांग रहा हूँ, या क्या इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज, मतलब मैं क्यों लगा रहा हूँ इंटरेस्ट? मैं तो अगर रिटर्न ही मांगूंगा ना, अगर मैंने 10 लाख रुपए लगाए तो मुझे चाहिए कि 12% रिटर्न अरे साल का। पार्टनर अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेता है पैसे, उसके लिए इंटरेस्ट तो देगा ही ना। ओके, देखो ऐसा होता है कि बिजनेस फर्म्स में, पार्टनरशिप फर्म्स में ये होता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर मेरी अपनी फर्म है और हम लोग अपने घर के ही लोग हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स हैं या फादर एंड सन पार्टनर्स हैं, तो आप अपनी फर्म में चाहते हो कि दिखाना कि यार प्रॉफिट आया, आप इंटरेस्ट नहीं क्लेम करोगे, आपकी मर्जी है, आप उसमें क्लेम अपनी पार्टनरशिप फर्म से क्लेम करो या नहीं करो। लेकिन आप थर्ड पर्सन से, लेट अस से आप और रवि हो, मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहा हूं, तो आप दोनों ठीक है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंडशिप अलग है यार, लेकिन आपने अपना पैसा लगाया, तो आप अपनी फर्म से चार्ज कर रहे हो ना इंटरेस्ट, आप रवि से चार्ज नहीं कर रहे हो इंटरेस्ट। आप कह रहे हो यार देखो बिजनेस फर्म में देखो, हिसाब जो है, वो एक कहावत है कि हिसाब जो है बाप और बेटे के बीच में भी होता है। हिसाब रिश्ता अलग है, फ्रेंडशिप अलग है, लेकिन हिसाब है बिजनेस फर्म का। तो आप कहते हो नहीं, मैं इंटरेस्ट अपना उठाऊंगा, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी मैं लूंगा, क्योंकि कैपिटल बिजनेस फर्म एक आपके लिए अलग है। तो आप कहते हो कि मैं इंटरेस्ट भी लेती हूँ, आप उसमें बाद में फिर प्रॉफिट होता है, तो वो इंटरेस्ट आप खर्चा दिखा सकते हो, बिजनेस फर्म दिखा रही है अपना एक्सपेंस उसको। तो पार्टनरशिप फर्म्स में ये एक ऑप्शन होता है कि आप उसमें एज अ लोन दिखा रहे हो अपनी कैपिटल को, उसमें जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट की अपने बिजनेस में, तो उसका इंटरेस्ट पार्टनर्स के लिए अलाउ होता है एज एन एक्सपेंस। पार्टनर्स तो आपने जो सपोज 5 लाख रुपया लगाया, उसके उसमें आपने लेट से आपने बिजनेस फर्म में बोला है कि मैं इसमें 10% इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे, तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपया आप हर साल अपना खर्चा दिखा रहे हो, बिजनेस फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो गया, आपके लिए वो इनकम हो गई, बिजनेस इनकम हो गई आपके। हाँ, जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से भी आप फिर 50% लोगे, तो 50% जो आप बिजनेस प्रॉफिट का लोगे, उसके ऊपर आपको बिजनेस फर्म में टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो बिजनेस फर्म दे चुकी है। लेकिन जो आपने इंटरेस्ट लिया है बिजनेस फर्म से, या जो आपने सैलरी उठाई है, वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, इंडिविजुअल के हाथ। ये मैं बोल रहा हूँ। अब क्लैरिटी है, आई है तुम्हें कमलेश? यस सर, अब समझ गया मैं। हाँ, तो वो रिटर्न जो बिजनेस का है वो है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट निकलेगा नेट इनकम से, जब आप खर्चे दिखाएगी। वो बिजनेस के लिए अलग है, बिजनेस ये नहीं जानता कि कमलेश अलग है, वो उसका पार्टनर है, बट एज ए पार्टनर आप अपनी बिजनेस फर्म को अपना पैसा लेंड कर रहे हो, तो आप को हक है, आप उसका इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो अपनी बिजनेस फर्म से। हाँ, कभी कभी होता है, जैसे हमने भी बिजनेस फर्म चलाई थी, हम लोग की फैमिली की बिजनेस फर्म थी, तो हम उसमें अपना इंटरेस्ट क्लेम नहीं करते थे, कि क्योंकि हमारे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम थे, तो हम ये सोचते थे अगर हम सैलरीज दिखाएंगे और ये इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हमारी बिजनेस फर्म में प्रॉफिट निकल के ही नहीं आएगा। तो जब आप चाहें तो उसमें दिखा सकते हैं, जब आप चाहें नहीं भी दिखा सकते, वो आपके ऊपर है।
सिमिलरली अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी के ऊपर हम आएंगे बाद में, कंपनी में भी आप उसको एज अ लोन दिखा सकते हो अपनी कैपिटल को, या एज ए इक्विटी दिखा सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है सोल्यूशन में नेम ऑफ द एसएससी आ गया, असेसमेंट ईयर 1 साल बाद होता है। प्रीवियस ईयर अगर आप असेस कर रहे हो 16-17 का, तो असेसमेंट ईयर हो गया 17-18। स्टेटस इज फर्म, रेसिडेंशियल स्टेटस जो हम कल पढ़ रहे थे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है फर्म की, तो इंडियन लॉज लगेंगे इसमें, टैक्स ये इंडिया में देंगे। तो यहाँ इन्होंने जैसे कंप्यूटेशन किया, डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस जैसे 5,000 रुपीज जनरल एक्सपेंसेस, क्योंकि ये पता चला कि भाई गोवा ट्रिप के लिए थे पर्सनल, ये डिसअलाउ हो गए 5,000। इनकम टैक्स एडवांस, ये पूरा का पूरा डिसअलाउ हो गया, बिकॉज इनकम टैक्स इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, 54,000 डिसअलाउ हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने लिखा है ना 1,500 रुपया उसने ज्यादा चार्ज किए हैं जितना लिमिट बनाई हुई है गवर्नमेंट इनकम टैक्स ने, कि पार्टनर भी 12% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता। और हो सकता है इस साल अगले साल जो बजट आए ना उसको मैं और कम कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल इंटरेस्ट कम हो गए। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ ऑफ पार्टनर जो मैं बता रहा था, ये भी डिसअलाउ हो गया, तो 69,000 ये डिसअलाउ हो गए। तो प्रॉफिट उसने नेट प्रॉफिट कितना दिखाया था 46,000, 46,000 में ये नेट प्रॉफिट और ऐड हो गया उसका 69,000, क्योंकि ये खर्चे अलाउ नहीं हुए, तो 1,15,000 रुपीज इसकी नेट इनकम बन गई। अलाउएबल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा भी और नहीं है, इनकम चार्जेबल एक्सेट्रा, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया 1,15,000. So note any payments of salary, bonus, commission or remuneration paid to a working partner if authorized by a partnership deed and such amounts are within the limits as specified under section 40B shall be allowed as deduction in the computation of income of firm. तो अगर लिमिट के अंदर उसका रिम्यूनरेशन है जो फॉर्मूले के अंदर और पार्टनरशिप डीड में भी दिया हुआ है, तो अलाउ हो गए सैलरी एंड रिम्यूनरेशन, इसलिए वो अलाउ किए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बिजनेस फॉर्म का कंप्यूट करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम छोटी छोटी बातें समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लें इसमें, इसमें क्या है, अच्छा अब ये कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मिस्टर रंजीत, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्होंने भी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया, इधर ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया 2,50,000, बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000, डिविडेंड इनकम 3,000, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 9,000, कमीशन आई है 10,000, ब्रोकरेज आई है 10,000, सन्ड्री रिसीप्ट्स आए हैं, सन्ड्री मीन्स मिसलिनियस रिसीप्ट 5,000, शेयर ऑफ इनकम एचयूएफ से मिला है 3,000। और खर्चे क्या दिखाए इन्होंने, सैलरीज दिखाई है 1,65,000 की, ऑफिस एक्सपेंसेस 18,000, डेप्रिसिएशन क्लेम किया है 14,000, सेल टैक्स, लीगल एक्सपेंस, इनकम टैक्स, पेटेंट परचेज, रिपेयर्स, डोनेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जनरल एक्सपेंसेस, टोटल नेट प्रॉफिट इसलिए 44,000 समथिंग नेट प्रॉफिट दिखाया। मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं, सारे खर्चे वर्चे दिखा के ना नेट प्रॉफिट जीरो कर देते हैं या बहुत कम दिखाते हैं। तो ये एक छोटा सा वो है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखाया है सैलरी इंक्लूड 6,000 पेड टू वर्कर्स एम्प्लॉयड एट होम। तो आप देखो ये अलाउ नहीं होंगे, जो सैलरीज दिखाई है इसने 1,65,000 की, 6,000 उसमें लेस हो जाएंगे, ये खर्चा अलाउ नहीं होगा बिकॉज ये होम वर्कर है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,000 पेड टू द एडवोकेट इन कनेक्शन विद पर्सनल केस। जो लीगल एक्सपेंसेस ने क्लेम किए 8,000 के, उसमें 1,000 रुपया उसको कोई पर्सनल केस था, तो वो अलाउ नहीं होगा ये भी। देन थर्ड पॉइंट, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 4,000 एज कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड। चलो ये तो ठीक है, अलाउ होगा। आउट ऑफ द बैड डेट्स रिकवर्ड ओनली 4,000 वर अलाउड एज डिडक्शन अर्लियर। बैड डेट इसने दिखाए हैं, बैड डेट्स 3,000, so only 4,000 पर allowed as reduction earlier। चलो ये देखते हैं क्या है इसमें आगे। So disallowable expenses ये करती है ना, सैलरीज जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए थे 6,000 लेस कर दी, लीगल एक्सपेंसेस 1,000 डिसअलाउ कर दिए, इनकम टैक्स 7,000 डिसअलाउ हो गया, पेटेंट्स परचेज भी यहाँ डिसअलाउ हो गया,
पेटेंट्स एक्चुअली ये देखना पड़ेगा, इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा, ये पर्सनल के लिए कोई पेटेंट्स परचेज किए होंगे उसने, तो इसलिए डिसअलाउ। अच्छा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्चुअली पेटेंट्स जो आप परचेज करते हो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसलिए डिसअलाउ कर दिया। यहाँ तो 12,000 है, पेटेंट्स तो कई कई लाख रुपया में परचेज करने होते हैं आपको। जैसे आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आप कोई टेक्नोलॉजी परचेज करके ला रहे हो, तो उसके अंदर आपने कई लाख रुपया स्पेंड किया, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। डोनेशन, डोनेशन का मैं आपको बताऊंगा, एक सेक्शन 80G होता है, उसमें डोनेशन के लिए देर आर ओनली स्पेसिफिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G। इफ यू गिव डोनेशन टू देम देन ओनली यू कैन क्लेम। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन देते हो, आप प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर फंड में आपको डोनेशन देते हो, तो उस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी एक लिस्ट है। या बहुत सारे ट्रस्ट हैं या इवन टेम्पल्स भी हैं जिन्होंने 80G में रजिस्टर कराया हुआ है, अगर आप वहां डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। ऐसे नहीं आपने किसी को भी चलते फिरते डोनेशन दे दिया या किसी भी संस्था को दे दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए, बिजनेस फर्म में डोनेशन आप वैसे देंगे तो डिसअलाउ होगा, ये अलाउ नहीं होगा। तो आप अपने पर्सनल रूप से किसी को, चाहे आप अपना पूरी प्रॉपर्टी दे दो, तो वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इन्होंने डिसअलाउ कर दिया, 3,000 ये डिसअलाउ कर दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि ये इसने पहले क्लेम कर चुका है 4,000, इसमें ये लिखा ना आउट ऑफ द बैड डेट्स रिकवर्ड, तो ये इसलिए अलाउ नहीं किया उसको। सो एड इनकम नॉट चार्जेबल। फिर साथ में हम ये भी देखेंगे, इनकम इसने सारी दिखा रखी है, इसमें कई इनकम जो है वो बिजनेस इनकम नहीं है, सो दे आर नॉट चार्जेबल टू बिजनेस इनकम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने बैड डेट्स रिकवर्ड, हाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ इसने दिखाया है बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000, ये इसमें से 3,000 ये कम कर लो, ये हो गए 7,000। 7,000 में से अच्छा सॉरी, उसको छोड़ दिए आप। 10,000 में से 4,000 इसने पहले अलाउ कर दिया था, ये सिंपल किया है। 10 में से 4,000 ये डिडक्ट करके ये 6,000 यहाँ पर दिखाया है, जो कि बैड डेट्स पुराने हैं, इसके ऊपर उसने पहले टैक्स दे दिया होगा, तो इसको ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो पुराने उसके उधार थे जो उसने रिकवर किए हैं, सो दीज आर नॉन टैक्सेबल। डिविडेंड इनकम इज नॉन टैक्सेबल अप टू 10 लाख रुपीज, तो 3,000 का डिविडेंड नॉन टैक्सेबल होगा। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसका पर्सनल हो गया, उसका रेंट, ये बिजनेस इनकम में नहीं आएगा, तो 9,000 ये भी चार्जेबल इनकम नहीं है। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ, एचयूएफ से हमने बात की थी, जो भी मेंबर्स को इनकम होती है शेयर्स एचयूएफ से, वो नॉन टैक्सेबल है, तो ये हमने उसकी इनकम भी लेस कर दी, तो उसका टैक्सेबल इनकम आई थी 75,000, बट इसमें से लेस कर दिया है 21,000, तो नेट उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गई 54,000। So I think you have got some idea about what kind of expenses we should allow in a business firm. So इसके हिसाब से हम कंपनी का भी फिर हम पढ़ सकते हैं। तो बट बेसिक हम बिजनेस फर्म का जब हम सीख जाते हैं तो हम कंपनी का भी सीख जाएंगे ऐसे, राइट? एनी क्वेश्चंस? No, sir. Now let us talk about LLPs. You have studied LLPs when you were studying Company Act and legal aspects of business, and I had told you what LLPs are. LLPs are partnership, are a form of business which lies between a partnership firm and a private limited company. So it has got features of some partnership firm and some features of a company. याद है ना आपको? LLPs में there can be minimum 2 partners, but maximum number of partners, how many maximum number of partners can be there in an LLP? Tell me.
how many maximum number of partners can be there in a LLP? There is no limit of maximum partners, and LLP, as Neha Demla has written, that they come with limited liability. In a partnership firm, the partners have unlimited liability. और पार्टनरशिप फर्म में एक और रूल होता है कि a business firm cannot buy assets in its own name. The assets are in the name of the partners in the case of business firm. Whereas in the name of a company, if you are running a company, the partners are, or the promoters are different entities than a company. So the same rule applies to LLP. It is a limited liability partnership, as the name indicates. So we have LLP Act 2009. So the first company was formed in 2009 itself. So LLPs have been started in India to enable international operations. So and you can have partners, international partners also with foreign citizenship also. You can have partners. The only condition is that there has to be, out of so many partners, at least 2 partners should be designated partners. What do you mean by designated partners? Designated partners means that who will be responsible for signing. They will be kind of signing authorities. They will be the face of the LLP. They are designated partners. And out of the 2 designated partners, at least 1 partner, designated partner, has to be a resident of India. And he or she has to be resident and ordinarily resident of India, you can say, in other words. So then in an LLP, a partner is not responsible for the acts or misdeeds of other partners. Whereas in a simple partnership firm, yes, a partner is responsible for the acts of the other partners. Now, profit will not be taxed in the hands of the limited liability partnership and will be taxed in the hands of LLP and not in the hands of the partner. So the same rule applies here also. The benefit of LLP, क्यों लोग LLP बनाते हैं, क्यों लोग कंपनी नहीं बनाते? Because the moment you make company will pay its tax differently, and the shareholders or the promoters will also have to pay the tax on the same profits. तो कंपनी के केस में गवर्नमेंट को फायदा ये है कि उसी प्रॉफिट के ऊपर वो 2 बार टैक्स चार्ज कर लेती है. एक बार कंपनी पे कर रही है, दूसरी बार जो पार्टनर को जो शेयर इन द प्रॉफिट मिला वो भी पे करेगा उसके ऊपर टैक्स, ऑफ कोर्स एक लिमिट के बाद. लेकिन एलएलपी में और पार्टनरशिप में द टैक्स, बिजनेस इनकम टैक्स विल बी पेड बाय द फर्म and not in the hands of the partners. So that those are the plus points of LLPs as well as partnership firms. Then here difference क्या है? Partnership firm जैसे अभी बताया था कि cannot own assets in its own name, whereas LLP can own assets in its own name. So that feature of company has come in the LLP. There is no minimum capital required to start a LLP. हाँ, LLP में अब रूल क्या है? देखिए, LLP का रूल ये है कि LLP shall be exempt from statutory audit if the turnover does not exceed 40 lakh. अगर आपका टर्नओवर 40 लाख तक है तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है अपने अकाउंट्स को. बट
बल्कि अब रूल नया आ गया, सॉरी, नाउ as soon as your turnover exceeds 60 lakh rupees, you have to get your accounts audited. Whereas in the case of partnership firms, if your turnover exceeds 1 crore, then only tax audit is necessary. Before 1 crore, you need not audit your accounts. ऑडिटर के साथ ऑडिट नहीं कराने पड़ेंगे आपको, लेकिन एलएलपी में है 60 लाख के ऊपर आपकी टर्नओवर होती है तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं। और कंपनीज में क्या है, कंपनीज में कोई टर्नओवर का लिमिट नहीं है, आपको ऑडिट कराने नहीं पड़ेंगे। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज भी हैं, उसके अंदर स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, पेनी स्टॉक्स भी हैं, सबको अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ते हैं, क्योंकि आप पूरे सेबी के अंडर में, स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में आ गए हो तो आपको ऑडिट कराने पड़ते हैं। इसमें भी क्या टैक्स रेट है एलएलपीज में? द टैक्स रेट इज 30% फ्लैट रेट। और सेम रूल है, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होती है तो देन एडिशनल सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12% विल बी चार्ज। सो सेम रूल एज पार्टनरशिप फॉर्म। Deduction in LLP also, interest paid to the partners on their capital employed can be used as business expense. So this kind of deduction is allowed. Any salary, bonus, commission or remuneration given to the partners can also be allowed as the deduction. देन सेम रूल ऑफ कितनी आप सैलरी दिखा सकते हो, एलएलपी में भी वही सेम रूल है कि पहले 3 लाख का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आप 90% तक रिम्यूनरेशन दिखा सकते हो, या 1.5 lakh, whichever is more, and any profit more than 3 lakh rupees you have to show the remuneration at the rate of 60%. Then yesterday we had talked about presumptive taxation scheme. Presumptive taxation scheme applies to a partnership firm, whereas it does not applies to LLPs or companies. So only if you are running your business as a proprietor business, as a partnership business, or as a professional, then you can avail this presumptive टैक्सेशन स्कीम। बट अगर आप कई बहुत सारी लॉ फर्म्स चल रही हैं, बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स एलएलपी की तरह चल रही हैं, दे कैन नॉट मेक यूज ऑफ द प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज फार एज एलएलपी इज कंसर्न, कि कई बार क्या होता है कि कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर कन्वर्टिंग टू एलएलपीज, और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आल्सो वांट टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी फर्म्स, और दे सेल देमसेल्व्स in such a manner that the new firm which is formed is a kind of a LLP. Now, if there is any capital gain out of it, it will not be taxable. So, in fact, my next topic would be capital gains also, because you people should also know what is capital gains. Because if you are studying corporate tax planning, you must know what is capital gains. So, I hope some of you know about it, but थोड़ा सा उसमें small nuances हैं जो कि हम लोग discuss करेंगे। अभी only 5-10 minutes are left, so let us discuss about this topic, miscellaneous things. Let us discuss some miscellaneous things about taxation. So I invite any other questions from you people. Mr. Ravi. Yes, sir. Yes, sir. You know what is the attendance now? There are 69 people, 70 people, Yes, sir, 71. So if you leave me, there are 70 people. Yes, so sir. तो एक कहावत है ना, एक हिंदी में एक उर्दू में शेर है कि मैं अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो यहाँ पर वही हो रहा है, देखिए कारवां बन रहा है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। यस सर। तो मेरे ख्याल में चलते चलते कहीं 100 ही लोग पूरे ना हो जाए इसमें। हाँ जी, अब थोड़ा मिसलिनियस बात कर लें टैक्सेशन के बारे में। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, जनरल क्वेश्चंस हो,
तो अब डिस्कस कर लेते हैं, 7-8 मिनट हैं बचे हुए, बताइए। चलो मैं विदाउट स्लाइड्स के आपको थोड़ा सा फिर कैपिटल गेन्स का बता दूं अगले 7-8 मिनट में। कैपिटल यस सर, गेन्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, यस सर। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। देखिए कैपिटल गेन्स क्या होते हैं कि कैपिटल एसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कैपिटल एसेट्स। सो इनकम टैक्स लॉ सेज के कैपिटल एसेट्स क्या है, उन्होंने 4-5 तरह के कैपिटल एसेट्स बताए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि कैपिटल एसेट्स हैं आपका लैंड, बिल्डिंग इज ए कैपिटल एसेट, land, property, real estate is a capital asset. So if you sell any land or a building, it may be residential or it may be commercial, it is a capital asset. So whatever gains you make by selling them is a capital gain. So it's a different category altogether. आप इसको business income नहीं दिखा सकते, neither you can show it as salary, तो है ही नहीं है। देखिए 5 हेड होते हैं किसी भी इनकम टैक्स के लिए, 5 हेड। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरीज, सेकंड है इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, फोर्थ इनकम आपकी होती है थ्रू कैपिटल गेन्स, सॉरी थर्ड इनकम, फर्स्ट हो गई सैलरी, सेकंड हो गई बिजनेस एंड प्रोफेशन, थर्ड हो गई कैपिटल गेन्स, फोर्थ आपकी हो गई फ्रॉम रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसको इन्होंने बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो रेंटल इनकम माना है। उसमें आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ इनकम होती है रेंटल इनकम, और फिफ्थ इनकम मानी जाती है मिसलिनियस इनकम। मिसलिनियस में उन्होंने बता दिया इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट हो गए आपके। मिसलिनियस इनकम में आपको कोई गिफ्ट मिल गए, आपको कहीं से, कहीं पे आप किसी शो में गए, वहां से आप कोई प्राइज जीत के ले आए। ये 5 तरह की इनकम बताई है। इसके अलावा कौन सी इनकम होती है वो आप मुझे बता सकते हैं। वो सारी जितनी भी है इसके अलावा एक्स्ट्रा इनकम होंगी वो सब अदर सोर्सेज में आएंगे, मिसलिनियस इनकम में आएंगे। आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, आपको कहीं से कोई गिफ्ट मिला है, आपको कहीं से इंटरेस्ट इनकम हुई है, आप कोई ट्यूशन ले रहे हैं, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी आपकी। आप सपोज कर लीजिए जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं उनको जो सैलरी मिल रही है वो तो उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी। उनको कहीं से एक्सटर्नल एग्जामिनर बनके वो कहीं गए, एक्सटर्नल एग्जामिनर बन करके कोई फीस मिलती है उनको, टीए डीए मिलता है, उसको डीए मिला, वो सब फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगी। एग्जामिनेशन की कॉपीज उन्होंने चेक की तो पर कॉपी के हिसाब से उनको कोई अगर रेम्यूनरेशन मिला है यूनिवर्सिटी से तो वो भी अदर सोर्सेज में डालेंगे। ठीक है ना। तो अब कैपिटल गेन्स में गवर्नमेंट सेज के कैपिटल एसेट्स आर ऑफ 3-4 टाइप्स। एक तो मैंने बता दिया आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, वो बाय एंड सेलिंग से जो आपको गेन होता है दैट इज कैपिटल गेन। सेकंड इज थ्रू सम फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, लाइक बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को मैंने सेल किया हायर रेट पे, शेयर्स मैंने सेल किए हायर रेट्स पे, और ये हो गए फाइनेंशियल एसेट। म्यूचुअल फंड यूनिट्स आ गए उसमें, म्यूचुअल फंड यूनिट्स से भी मैंने जो प्रॉफिट, सो दीज आर ऑल कैपिटल एसेट्स। ये हो गया फाइनेंशियल एसेट्स। इसके बाद आते हैं कमोडिटीज, आती है कैपिटल गेन में। कमोडिटीज में आती है गोल्ड, सिल्वर, कोई भी कमोडिटी हो गई, जिंक, कॉपर, निकल, मेटल, इट मे बी मेटल्स, इट मे बी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक बाजरा, ज्वार, चना, pulses, so all kinds of commodities, it may be crude oil, maybe लोग बाग फ्यूचर्स खरीदते हैं उसके, it may be mentha oil, it may be lot of commodities. So when you sell them at a higher rate, that is also a capital gain, unless and until it is a part of your trade. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका आप डेली उस चीज को बेच रहे हैं, आप बाजरा आटा बेचते हैं, तो वो एक स्टॉक इन ट्रेड हो गया, दैट इज नॉट कैपिटल गेन, दैट इज बिजनेस इनकम। सिमिलरली आप गोल्ड खरीदते हैं, आपने ज्वेलरी बनाई है, फिर आपने उसको सेल किया है, तो वो आपने अगर उससे प्रॉफिट कमाया है तो वो कैपिटल गेन्स हो गया।
अब इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. इन द केस ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, when you buy these shares from the recognized stock exchange, if you sell these shares anytime within 1 year, it is known as short term capital gain or short term capital loss भी हो सकता है, तो short term capital loss. But if you have sold any time 1 year or after 1 year, that is if you have sold your share on the 365th day or any time after that, it is a long term capital gain or long term capital loss. In the case of shares, within 1 year अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं और मैं उससे प्रॉफिट कमा रहा हूं, नेट प्रॉफिट, कुछ में लॉस हुआ कुछ में प्रॉफिट हुआ, तो जो भी मेरा नेट गेन हुआ है उसके ऊपर आई हैव टू पे 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स टू द गवर्नमेंट. बट इफ आई हैव सोल्ड माय शेयर्स, those shares which I have sold after 1 year, तो उसमें मैं देखूंगा कुछ शेयर्स में लॉस होगा, कुछ शेयर्स में प्रॉफिट होगा, तो नेट प्रॉफिट, नेट गेन जो हुआ है उसके ऊपर अप टू 1 लाख रुपीज गेन देयर इज नो टैक्स, इट इज टैक्स फ्री. बियॉन्ड 1 लाख रुपीज वट एवर इज माई गेन, आई हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है, दिस इज क्लियर? Yes, sir. Okay. In the case of property, if I sell my property after buying, if I sell my property from the date of purchase, if I have sold it within 2 years, पहले 3 साल का रूल था, अभी ये 2 साल का रूल आया है, पहले 3 साल में होता था. Within 2 years if I sell my property, then it will be known as short-term capital gain. And if I sell my property anytime after 2 years, then it is 2 years and more than 2 years, then it is a long-term capital gain or loss. इसमें क्या रूल है? बस इसके बाद फिर हम बाकी वाले जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है वो बाद में करेंगे. प्रॉपर्टी के केस में विद इन 2 years अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, तो आप जो गेन आया है, it will be straight away added to your income, individual income, and you will have to pay tax according to your tax slabs. तो ये सिंपल है इसमें रूल के आपके टैक्स स्लैब में, इसमें कोई फ्लैट रेट नहीं है प्रॉपर्टी के केस में. शॉर्ट टर्म, मान लीजिए रवि ने कोई छोटी सी प्रॉपर्टी थी इसके पास, और रवि ने कोई रेट बढ़े ही नहीं, इसने 1 साल पहले खरीदी थी, 2 साल पहले खरीदी थी, 2 साल में इसने सेल कर दी, इसने सिर्फ 2.5-3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ. बट 2.5-3 लाख रुपए तक तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता, तो इसके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स फ्री हो गई, इनकम हुई है बट इट बिकम्स टैक्स फ्री. हाँ, अगर प्रॉपर्टी में से 10 लाख की इनकम हो गई है गेन की, तो पहले 2.5 लाख रुपया 0%, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपया 5%, बैलेंस 2.5 लाख रुपया 20%, तब भी वो उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा उसके ऊपर. इनकम टैक्स स्लैब वाला रेट. इनकम टैक्स स्लैब लगेगा शॉर्ट टर्म. यस. अगर आपकी पहले से ही इनकम है, सैलरी की इनकम है और भी इनकम है, तो उसमें और जुड़ जाएगी, तो हो सकता है सीधे 30% स्लैब में ही आ जाए, है ना. अगर किसी की ऑलरेडी 10-12 लाख रुपया 15 लाख रुपया इनकम है कहीं बिजनेस से, सैलरी से, तो उसको तो सीधे 30% देना पड़ेगा उसके ऊपर कैपिटल गेन. तो इसमें इस तरह से टैक्स स्लैब के ऊपर हो जाता है. लेकिन इफ यू हैव सोल्ड योर प्रॉपर्टी एनी टाइम्स आफ्टर 2 years, देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लाइज. इसके अंदर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मेरे ख्याल में वो हम नेक्स्ट वीक के लिए रिजर्व कर लेते हैं. तो उसके अंदर तो अभी उसको रिजर्व करते हैं. लेट अस कीप अ सस्पेंस ऑन इट. बाकी आप लोग इसको देखिएगा, एंड नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीक लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि उसमें एक है इंडेक्सेशन का फॉर्मूला होता है कि विदाउट इंडेक्सेशन द टैक्स रेट इज 10% एंड विद इंडेक्सेशन द टैक्स रेट इज 20% टैक्स, अगर कोई गेन होता है. वो हम समझेंगे इंडेक्सेशन क्या है. तो टैक्स रेट मैंने बता दिया, विद इंडेक्सेशन टैक्स रेट लगेगा 10%, विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स रेट लगेगा 20%.
So we any question, any thoughts, any addition you want to do? ये स्वाति कहाँ है? स्वाति तो पहले बहुत पार्टिसिपेट करती थी. स्वाति, आर यू देयर? हाँ भाई स्वाति, चलो रिकॉर्डिंग अभी बंद करते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द